Hello everyone. Today we are going to solve problems on homogeneous and non-homogeneous system of linear algebraic equations. Okay, this is part of matrices. Here we are solving this first sum. Find the values of k for which the equations, these three equations are given. X plus y plus z is equal to 1. Second equation, x plus 2y plus 3z is equal to k. And third equation, x plus 5y plus 9z is equal to k square, has a solution. Solve them for these values of k. Okay, this is non-homogeneous system because right hand side are constants non-zero, 1 k square. Now if suppose, first of all, what we have to do, we have to find out values of k. And then for each value of k we have to solve this system of linear algebraic equations. Express this system in matrix form. So this is non-homogeneous system. We can express like this: Ax is equal to b. A is matrix of coefficients. First column, coefficients of x 1 1 1. Second column, coefficients of y 1 2 5. And third column, coefficients of z 1 3 9. Okay, this is matrix A, which is matrix of coefficients. Then column matrix of unknown variables x y z. In these three equations there are three variables, three unknown variables. Now matrix B, which is column matrix of constant terms on right hand side, 1 k square, 1 k square. Okay, now we want augmented matrix. To get augmented matrix we have to club matrix A and matrix B like this. Augmented matrix is equal to, first of all, elements of matrix A 1 1 1 1 2 3 1 5 9. Draw vertical line, and on right hand side of this vertical line put this column matrix, that is 1 k square. Okay, now we have to apply only row transformations to reduce this matrix to upper triangular form. Means we want this element 0, this element 0 and this element 0 with respect to diagonal elements. Now first transformation, 1 minus 1 0, that is R2 minus R1. Apply R2 minus R1 and then apply R3 minus R1, gives augmented matrix reduces to, applying these two row transformations, first row as it is 1 1 1 1, then 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, and then 3 minus 1 2, k minus 1, then 0 4 8 k square minus 1. Now we want here 0 with respect to this diagonal element, so apply R3 minus 4 times R2, R3 minus 4 times R2. This gives augmented matrix reduces to, change in R3 only, first two rows as it is 1 1 1, then 1 0 1 2, k minus 1 0, 4 minus 4 0, 8 minus 8 0, k square minus 1,
k square minus 1 minus 4 times k minus 1. That gives k square minus 4k plus 3. Okay. Now from here up to this vertical line, this is matrix A. Its rank is 2. Why? There are two non-zero rows in this form. This first row up to this, second row up to this. These two are non-zero rows and third row is zero row. This system of linear algebraic equations is having some solution. Means system is said to be consistent if rank of matrix A and rank of this augmented matrix is same. But rank of A is 2, then augmented matrix, its rank must be 2. Then only this system will be consistent. So this must be equal to 0. Okay, this element k square minus 4k plus 3 must be equal to 0. Then only rank of A which is equal to rank of augmented matrix which is equal to 2 बन जाएगा. Okay, that's why equating this to 0 get the values of k. Since rank of A is equal to 2, hence rank of augmented matrix must be equal to 2 if and only if k square minus 4k plus 3 is equal to 0. And this can be written as k minus 1. If you want, you can write this as k square minus 3k minus k plus 3 is equal to 0. Taking k common, k minus 3 minus 1 common, k minus 3 is equal to 0. This gives k minus 1 into k minus 3 is equal to 0. Then k is equal to either 1 or 3. If k is having 1 or 3 values, then only this system will be consistent. It must have solution. Okay. Now, by using k is equal to 1 and k is equal to 3, there arises two cases. Case 1. Suppose k is equal to 1. K is equal to 1 gives solution, at least one solution. कम से कम एक solution. Maybe more than one solutions. Depends upon rank of A, rank of augmented matrix and number of unknown variables. Number of unknown variables are 3. N is equal to what? Number of unknown variables. And that unknown variables are x, y, z. Okay. So number of unknown variables is equal to 3. Number of unknown variables is equal to 3. Substituting k is equal to 1 in this matrix, then augmented matrix becomes like this. First row as it is 1, 1, 1, then 1, 0, 1, 2, k minus 1, 1 minus 1, 0, 0, 0, 0, k square minus 4k plus 3, k is equal to 1, 1 minus 4 minus 3 plus 3, 0. Okay, and now here rank of matrix A is equal to 2 and rank of this whole matrix, that is augmented matrix, there are two non-zero rows, first and second. So in this case rank of A is equal to rank of augmented matrix, and which is equal to 2. Rank of A is equal to rank of augmented matrix is equal to 2, and this is less than 3. 3 is number of variables, less than 3. And less than 3 means this implies there exist
there exist infinite number of solutions. Infinite number of solutions. And that solutions we have to find out. Considering first row, we will get first equation 1 times x plus 1 times y plus 1 times z is equal to 1. That is x plus y plus z is equal to 1. This is one equation. Then 1y, 1 times y plus 2 times z is equal to 0. This is second equation. Now n minus r. N is 3, r is 2. N minus r is equal to 3 minus 2 is equal to 1. Meaning of this, one variable we have to consider some value, that is t. Suppose let us assume let z is equal to t. If z is equal to t, considering value of z is equal to t, we have to find out values of x and y in terms of t. Put this into, put in equation 2. Then if we substitute this equation in 2, that gives y. Y is equal to minus 2z. Okay. Hence y is equal to minus 2t. This is second value. Now we have to find out third value x. Put y is equal to minus 2t and z is equal to t in equation 1. Hence x is equal to 1 minus y minus z. That is 1 minus plus 2t minus z minus t. Hence x is equal to 1 plus t. This is third value. Third unknown variable x, its value is 1 plus t. Okay. In this way, case number 1 is over. We have obtained values of 3 unknown variables x, y, z. If we substitute values of x, y, z in a given matrix or given system of equations, then that gives infinite number of solutions. T will take any value. T will take infinite number of values. Okay. Now case number 2. Case number 2. If k is equal to 2, k is equal to 3. K is equal to 3. Substitute k is equal to 3 in this matrix. In this matrix, reduced form of augmented matrix. Then augmented matrix becomes this will be first row as it is 1 1 1 1. Second row becomes 0 1 2 k square minus 1. Sorry, k minus 1. 3 minus 1 2. And then third row reduced to 0 0 0 0. And this implies rank of A is equal to rank of augmented matrix is equal to 2, and which is less than number of variables 3. Hence n minus r is equal to 3 minus 2 is equal to 1. This 1 implies give some particular value to one variable. Give some particular value or give some value to one variable, that is z. Suppose z is equal to, again assume t. Z is equal to t. And now from this we will get two equations. One is x from first row, x plus y plus z is equal to 1, and from second row y plus 2z is equal to 2. Okay, this is suppose equation 1 and this is equation 2. Put z is equal to t in 2. Put in 2. That gives value of y. Value of y will be 2 minus 2z. That is 2 minus 2t. 2 minus 2t. This is value of y. Then put values of
y and z in equation 1, that gives value of x. X is equal to 1 minus y minus z. 1 minus 2 plus 2t minus t. Hence, x is equal to finally value of x. This is equal to x will be minus 1 plus t. In this way, we have obtained values of 3 unknown variables x, y, z. Put these values of x, y, z, that gives infinite number of solutions. System will give infinite number of solutions. Okay, this is solution of this sum. Once again try to understand. यहाँ पे 3 इक्वेशंस दिया है, x plus y plus z is equal to 1, x plus 2y plus 3z is equal to k and x plus 5y plus 9z is equal to k square. ये 3 इक्वेशंस है. इन 3 इक्वेशंस को ये 3 इक्वेशन सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इनका सॉल्यूशन मिलेगा. तो k का वैल्यू फाइंड आउट करना है और k का वैल्यू फाइंड आउट करके ये k का वैल्यू पुट करके ये सिस्टम सॉल्व करना है. ठीक है, ये इसका ये है. तो इस सिस्टम को हमने ax इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स फॉर्म में पुट किया. ये मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, ये मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स और ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म्स. देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दैट इज ए बी कंबाइन करके हमें ये मिल गया. इस पे रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके हमें इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में लाना है. तो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, ये 2 रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गया. फिर इसको 0 लाना है, इसलिए हमने R3 माइनस 4R2 अप्लाई किया तो आपको ये मिल गया. अभी इससे क्या होता है कि ये मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ये तो उसका रैंक 2 बन रहा है. तो इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 चाहिए, तभी तो ये सिस्टम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा इस सिस्टम का, या सिस्टम कंसिस्टेंट बोलेंगे हम. तो इसके लिए ये 0 होगा तभी तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 2 बनेगा, जो कि मैट्रिक्स ऑफ ए इसका रैंक है 2. तो ये इक्वल करने के लिए हमने इसको 0 बनाया. तो 0 बनाने के लिए इक्वेट किया 0 से, तो k की वैल्यूज हमें 2 मिल गई. k इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 3. तो k इज इक्वल टू 1 इस मैट्रिक्स में पुट करके हमें ये मैट्रिक्स मिल गया. तो इस मैट्रिक्स से पता चलता है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 एंड लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है. तो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. तो इससे हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे. फर्स्ट रो से ये इक्वेशन मिल गया, सेकंड रो से ये इक्वेशन मिल गया. n माइनस आर फाइंड आउट करना पड़ता है, यानी कि कितने वेरिएबल्स को हमें एक वैल्यू देना है. तो n माइनस आर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 मिल गया. इसका मतलब एक वेरिएबल को हमें एक नई वैल्यू देना है. z इज इक्वल टू टी दिया है हमने, तो वही वैल्यूज हमने सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो y मिल गया, और y और z की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो हमें x का वैल्यू मिल गया. ओके, इस तरह से केस नंबर 2 भी सॉल्व करना है. केस नंबर 2 में हमने क्या किया, केस नंबर 2 में k इज इक्वल टू 3 लिया, तो ये मैट्रिक्स बन गया. इस मैट्रिक्स का भी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 2 बन गया, विच इज लेस देन 3, सिमिलर टू केस नंबर 1. यानी कि यहाँ पे भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. तो n माइनस आर लिया तो 1 आता है. एक वेरिएबल को हमने वैल्यू दिया t, तो बाकी x एंड z फाइंड आउट किया इसमें पुट करके. तो z इज इक्वल टू टी मिल गया, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2t मिल गया, और x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस t मिल गया. तो t टेक्स एनी वैल्यू, t कौन सी भी वैल्यू ले सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकता है, इसलिए हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इस सिस्टम के. तो ये एक सम हो गया. लेट अस सॉल्व अनदर सम. Yes, let us solve this one. Discuss for all values of k, sum number 2, for which the system of equations has a non-trivial solution. Non-trivial solution means non-zero solution. Okay, and trivial solution means zero solution. Zero solution means what?
all variables, unknown variables will be having same value, that is 0. So means x is equal to y is equal to z is equal to 0. Three equations are given. This first equation, this is second equation, and this is third equation. Right hand sides are 0 0 0. Means what? This system is known as homogeneous system of linear algebraic equations. Okay, homogeneous system of linear algebraic equations हमें solve करना है. So let us solve this system solution for this. First of all, express this system in matrix form. So first column, that is coefficients of x, that will be 2 1 1. Second column, coefficients of y, that will be 3k, k plus 4, and 2k plus 2. And third column, coefficients of z, that will be 3k plus 4, 4k plus 2, and 3k plus 4. Okay, this is matrix of coefficients. Equate it to 0. Equating this to 0. Here, if you want, you can consider here column matrix of x, y, z. If you want, otherwise not required. X, y, z. Okay. Then we have to apply row transformations to reduce this matrix to upper triangular form. Right hand side is 0. Okay, चाहे तो ये कंसिडर करो, नहीं तो नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स विल बी 0. सो इफ यू वांट, यू कैन कंसिडर दिस आल्सो 0 0. Now this is matrix form of given system of linear algebraic equations. Let us take determinant value of this. We want first diagonal element 1, so apply R2 interchange with R1. First of all, apply this transformation. Then this becomes 1k plus 4, 4k plus 2. Then first row 2 3k, 3k plus 4. Third row as it is 1 2k plus 2, 3k plus 4. X, y, z is equal to 0 0 0. Then apply row transformations, R2 minus 2 times R1 and R3 minus R1. Applying these two transformations, R2 minus 2 times R1 and then R3 minus R1. This gives matrix becomes 1k plus 4, 4k plus 2, first row as it is, then second row R2 minus 2 R1, that gives 0, k minus 8 minus 5k. Then third row R3 minus R1, 1 minus 1 0, then k minus 2 minus k plus 2. Then column matrix of unknown variables x, y, z, and right hand side 0 0 0. Okay, this system is having non-trivial solution. Non-trivial means non-zero solution, and homogeneous system is always having some solution, maybe zero solution or non-zero solution. So non-zero solution exists only when rank of A is less than or equal to
less than 2 or equal to 2, less than or equal to less than or equal to n. N means number of variables, and number of variables are 3. Okay, so, and in this case yes, we have to find out determinant value of this. Determinant, if determinant of matrix of coefficients is 0, then let us find 1k plus 4, 4k plus 2, 0k minus 8, minus 5k, 0k minus 2, minus k plus 2. If this is equal to 0, then there exists non-trivial solution or homogeneous system, non-trivial solution. Okay, there exists non-trivial solution if this determinant value is 0. Here in first column only one element is non-zero, remaining two are 0. Its determinant value will be 1 into determinant of k minus 8 minus 5k minor of 1, deleting first column and first row, determinant of this and this, that is k minus 2 minus k plus 2 is equal to 0, and that gives equation in terms of k. Then 4 times this will give 4 times k minus 2 into k plus 2 is equal to 0. This implies there exist two values of k, one is plus 2 and another one is minus 2. Okay, and here if suppose k takes both of these two values, in that case this system contains zero solution or trivial solution. Okay, hence case number 1, there arises 3 cases. Case number 1, for k is equal to plus or minus 2. If k is equal to plus or minus 2, then there exists trivial solution, that is zero solution, trivial solution. And trivial solution means what? This implies trivial means zero solution. Hence x is equal to y is equal to z is equal to 0. Because if we substitute, k is not equal to, k is equal to plus or minus 2, then rank of matrix of coefficients becomes 3. So k is not equal to plus or minus 2. This implies rank of A is equal to number of variables, and this is equal to 3. That's why there exists trivial solution, and trivial solution is x is equal to y is equal to z is equal to 0. Then case number 2, if k is having value plus 2. Okay, if k is not equal to plus or minus 2, then this third row will be non-zero. Okay, but here if k is equal to plus 2, then 2 minus 2 0, minus 2 plus 2 0, third row becomes 0, and rank of matrix A, rank of coefficients matrix becomes 2, which is less than number of variables. This implies rank of A will be 2, and which is less than number of variables 3, and this implies there exist infinite solutions. There exist infinite solutions, and that solutions we have to find out. So if we substitute k is equal to 2 in this matrix, okay, then that matrix becomes like this: 1, k is equal to 2,
2 plus 4, 6, 10. Okay, then 0 minus 6 minus 10. 0, sorry, 0, 0, 0. Then x, y, z. 0, 0, 0. First row gives first equation, that will be x plus 6y plus 10z is equal to 0. Second equation gives, second row gives second equation, minus 6 minus 6y minus 10z is equal to 0. Okay, and then here n minus r is equal to 3 minus 2 is equal to 1. Give some particular value to one variable, another value, that is suppose z is equal to t. Let z is equal to t. Substitute z is equal to t in equation 2, that gives value of y, and that value of y will be, y is equal to becomes, here this is z is equal to t. If we substitute in second equation, y is equal to minus 5 upon 3 t. We get this value. And if we substitute x and y and z in equation 1, that gives value of x, and x is equal to, we get x is equal to 0. In this way, values of three variables we obtained in terms of t. And if t takes infinite number of values, so the system contains infinite number of solutions. Now case number 3. Case number 3, if suppose k is minus 2, substituting k is equal to minus 2 in this equation, then that gives, matrix becomes, hence 1, 2, minus 6, 0, minus 10, 10, 0, minus 4, 4, x, y, z, 0, 0, 0. Now here apply R3 minus R2. Before that, divide this second row by minus 10. R2 divided by minus 10. This gives, R2 divided by minus 10 gives 1, 2, minus 6, 0, 1, minus 1. R2 divided by minus 10. Similarly, we can divide third row also. R3 divided by minus 4, or R3 divided by 4. If you want R3 divided by 4 or R3 divided by minus 4. Hence R3 divided by minus 4. That gives third row 0, 1, minus 1. Okay. Then x, y, z is equal to 0, 0, 0. And now R3 minus R2. We can apply R3 minus R2. This transformation, row transformation. This gives 1 second. Yes. R3 minus R2 gives matrix becomes 1, 2, first row as it is, and then
second row 0 1 minus 1, 0 1 minus 1 as it is. Only third row will change 0 0 0. Then column matrix of unknown variables x y z is equal to 0 0 0. Okay, now you can check here this matrix of coefficients. There exist this is reduced form. In upper triangular matrix form there exist two non-zero rows, first row and second row. So rank of A is 2 and number of variables are 3. This implies rank of A is equal to 2 and number of variables n is equal to 3. So rank of A less than number of variables. Rank of A less than number of variables. This implies number of variables are 3. Rank of A is 2. So there exist infinite number of solutions. So find n minus r, that is 3 minus 2 is equal to 1, and this 1 implies we have to give some value to one variable. So let z is equal to t, one variable, that is z is equal to t. And now from here we will get two equations. First row gives first equation, that is x plus 2y minus 6z is equal to 0, and second row gives second equation, that is y minus z is equal to 0. This is one equation, this is second equation. Put the value of z in second equation, then y is equal to t. This is value of y. Okay, and by back substitution means put the value of z and y in equation 1, that gives x. X is equal to minus 2y plus 6z, and which is equal to minus 2y plus 6z, which gives minus 2t plus 6t, that is equal to 4t. Hence value of x becomes x is equal to 4t. So these are values of three unknown variables x, y, z for case number 3, that is k is equal to minus 2. In this way you can solve such type of sum. Once again try to understand this. Discuss. ओके, ये तीन इक्वेशंस दिया है और इन तीन इक्वेशंस को ये तीन इक्वेशंस है होमोजेनियस सिस्टम वाले, इनको सॉल्व करना है. इनको सॉल्व करना है कंसीडरिंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए, जीरो सॉल्यूशन नहीं. ओके, तो इसलिए हमने ये सिस्टम हमने मैट्रिक्स फॉर्म में सब्स्टिट्यूट किया. फिर ये R2 इंटरचेंज विथ R1 किया क्योंकि हमें फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 चाहिए. ये अप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स मिल गया. फिर R2 माइनस 2R1 एंड R3 माइनस R1 ये रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया क्योंकि हमें यहाँ पे जीरो चाहिए, यहाँ पे जीरो चाहिए. इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में लाना है. ठीक है, तो आपको ये मैट्रिक्स मिल गया. ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से आपको पता चलता है ये मैट्रिक्स, ये इस मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम में ये नॉन जीरो है, बाकी जीरो जीरो एलिमेंट्स है. इसके आगे करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, रैंक ऑफ ए मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3. नॉन ट्रिवियल के लिए लेस देन 3 चाहिए, लेस देन और इक्वल टू नहीं, लेस देन 3 ओनली. देन ओनली वी विल गेट नॉन जीरो सोल्यूशन. इक्वल टू n रहेगा ना, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n, देन देयर एग्जिस्ट ट्रिवियल सोल्यूशन. ओके, इसलिए हमने क्या किया, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये चाहिए हमें. लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल चाहिए तो देयर एग्जिस्ट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली व्हेन डिटरमिनेंट वैल्यू, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगा तो. ओके, तो 0 लाने के लिए हमने क्या किया, इसका डिटरमिनेंट निकाला. तो डिटरमिनेंट निकालने के बाद इक्वेशन इन के मिल गया. तो के की सॉल्व करने के, वो इक्वेशन सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू मिल गई 2 और माइनस 2. ये के इज इक्वल टू 2 और माइनस 2, ये के इज इक्वल टू प्लस 2 और माइनस 2 इस मैट्रिक्स फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा. लेकिन के
+2 भी नहीं है और -2 भी नहीं है, तो उस वक्त ये ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, इसलिए ये केस नंबर 1 क्या बनती है, k इज नॉट इक्वल टू +2 और -2, देन देयर एग्जिस्ट ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है ऑल 3 वेरिएबल्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0। और ये k नॉट इक्वल टू +और -2 का मतलब होता है रैंक ऑफ a इज n इज इक्वल टू 3, a का रैंक 3 बन गया। ठीक है, तो केस नंबर 2 लिया हमने, k इज इक्वल टू +2। k इज इक्वल टू +2 लेने के बाद उसी मैट्रिक्स में पुट किया, तो मैट्रिक्स इक्वेशन में पुट किया तो ये मिल गया। इससे पता चलता है कि पहले 2 रोज नॉन जीरो है, इसका रैंक 2 है, यानी कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको मिल गया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5/3t एंड z इज इक्वल टू t। ये 3 वैल्यूज मिल गई x और y, x y z की, अननोन वेरिएबल्स की। देन केस नंबर 3 अप्लाई किया, k इज इक्वल टू -2 लिया, तो उसमें ये पहला मैट्रिक्स मिल गया। फिर उसमें हमें ये 1 चाहिए, इसलिए R2 डिवाइडेड बाई -10 किया, साथ में R3 डिवाइडेड बाई -4 किया है, ये भी 1 1 आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स मिल गया। और फिर R3 माइनस R2 करके हमने दूसरा मैट्रिक्स फाइंड आउट किया, ये R3 माइनस R2 किया, तो आपको ये मैट्रिक्स मिल गया। और यहाँ पे इसके आगे कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं पहले 2 रोज नॉन जीरो है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज 2। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 3 है, रैंक ऑफ ए लेस देन n, तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। n माइनस आर इज इक्वल टू लिया तो वो 1 आ गया। इसका मतलब होता है कि एक वेरिएबल को कोई अलग वैल्यू दे दो, तो हमने z को t कंसिडर किया। यही z इज इक्वल टू t हमने इस इक्वेशन में पुट किया, जो कि फर्स्ट रो से मिल गया इक्वेशन, और सेकंड रो से ये इक्वेशन मिल गया। z इज इक्वल टू सेकंड में पुट किया तो y का वैल्यू मिल गया, y इज इक्वल टू t, और z और y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 40। इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू ऑल।